Today I am making blog in English. My half blog in English and half in Hindi. Jai Shri Ram friends. Thanks for visiting in my channel. I am Jesa Jagdish Singh Raut. Today I am making blog in English because yesterday my subscriber told me that please sir make blog in English. So I am not a speaker. I am not speak correct English, but I just try to speak correct English. Okay, if I speak any wrong pronunciation, so please don't be mind. Okay, today I just see you or show you my village and my ranger's mother. Okay, first of all I will show you my mother. Those are climbing the tree. Okay, let's guys. Okay, it's a huge tree if you see that, and my mother, she is my mother, and she climbing the tree, and she cut the some bushes from the tree for the buffaloes and cows. Okay, I don't know I'm speaking right or wrong, but let's see you. Oh my god, is my mother खतरों के खिलाड़ी. Okay, so now I will show you my village. Okay, so I will make some cultivations of fruits and vegetables in our village, and also I will introduce the members, how many members in my village. Okay, first of all, I will introduce to Dipu. Okay, so guys, he is Dipu. He is so person. Now I will show you in front. He is Dipu. You know that he also came in my life, and she is Komal. He is so show person, you know. And now I will show you some fruits. He is called Malta like orange, and other you will get vitamin C from the fruits. And let's see, she is my mother, खतरों के खिलाड़ी. So friends, as you know that tomorrow will be 31st December, last day of 2025, and tomorrow I will celebrate 31st with our family. Okay, after 3 years I will celebrate 31st with our family. Okay, I know I will speak so wrong wrong English, and using the wrong using the wrong grammar in the English. I don't know, but if I am speak wrong, then don't be mind. Okay, just take it as a funny vlog. Okay, guys. So now I will introduce my pet animals. Okay, first of all, introduce the our cow. Okay, and our buffalo. He is so aggressive. No, she is so aggressive. And now he is also so cute. Okay, she also like calm. And so now I will introduce my family members, and also my members of those are living in my village. Okay, my grandfather, my grandmother, my uncle, auntie, called in Hindi chacha, chachi, ama, bubu. That's all. Okay, now I will introduce you. Okay, you know guys, my lots of subscriber from Uttarakhand, from village like chacha, chachi, and all that. They don't know English. Okay, that's why my half blog in English and half in Hindi. बिकॉज क्योंकि लोग हिंदी में भी समझे और थोड़ा इंग्लिश भी कम्युनिकेट करेंगे तो उनके लिए आसान रहेगा. क्योंकि मैं तो आज थोड़ा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी इतना प्रॉपर आती नहीं, प्रॉपर आती है बट इन्वायरमेंट नहीं है ना. इन्वायरमेंट नहीं है तो इतना मतलब इतना भी वो नहीं है, मतलब एज आ वोकैबलरी इतनी अच्छी नहीं है कि मतलब रोज़ वो कर सकूँ. तो आई जस्ट ट्राई दैट कि मैं अपना पूरा ब्लॉग इंग्लिश में बनाऊं.
एंड इंग्लिश और आधी हिंदी में बनाऊँ. ओके, प्लीज़ डोंट बी माइंड बिकॉज आई डोंट नो. सो मिलते हैं आगे माय नेक्स्ट पार्ट में, जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा. सो गाइस, शी इज़ माय मदर. आप देख सकते हैं, है ना. पेड़ से नीचे उतर गई है अभी. धराती खो गई बस. नाउ आई विल शो यू माय कॉमेडियन चाचा. चाचा, चाचा. हेलो. बोलो. देखो बोलो बोलो. कहाँ बोल रहे हो, यहाँ बोल रहे हो आप? हाँ बोलो, आप बोलो. क्या कर लगी बता. कुछ तो बोलो. क्या बोले बताओ. मतलब आप इतने कॉमेडियन क्यों हो? बोलने वाली तो जगह ही नहीं है. हैं? Now I will show you our village and also our farms, in which I will cultivate the fruits and vegetables and other things. Uh, so many words in I will use in Hindi, also in English. Okay. First of all, I will show you like that the lemon tree. Lemon tree, big lemon tree. Big lemon, not big lemon tree. It's a big lemon. इन विच पहाड़ में इसको बोलते हैं कि नींबू छानते हैं तो ये नींबू यूज़ करते हैं. एंड दैट इज़ अ ट्री ऑफ ग्राउंड नट. ओके, ट्री ऑफ ग्राउंड नट्स. एंड यहाँ पे कल्टीवेट किया है थोड़ा. इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको यार, इसको बोलते हैं, पूछ के बताऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है. And I will show you our village road. Okay, that is our road. Okay, in which when I will go to Haldwani and other places, I will go from that road. Okay, these are small tanks in which the water is stored. Okay, the farming of what we say that matar. Matar. And if you speaking matar in English, so what we speak in English, yaar, I just forgot all the fruits and vegetables name, yaar. Those are I was learned in my childhood. What we call in matar, I don't know. I don't know what we called. Here's another small tank. Big, that is small tank, that is bigger than that. Okay, that is a farming of what is that, say onion, farming of onion. Okay, farming of onion. That is a tree of orange called Malta. I know I'm speak very wrong English, wrong using wrong grammar. I don't know, but yeah, but now this is the farming of लहसुन, called in English garlic, and farming of now I know the English of matar, what we call that, bees. Okay, bees, matar. And also that is a tree of naspati called peach. नाशपाती. एंड या ट्री ऑफ बांज कॉल्ड बांज. पहाड़ी में इसको बांज बोलते हैं. बांज के पेड़ हैं जो कि बहुत ठंड, मतलब इनसे ठंडा अच्छा होता है. इनसे दे गिव अस अ फ्रेश ऑक्सीजन. ओके, ऑल्सो if you see that, also I will show you the tree of what we called चीड़ का पेड़ कहते हैं इसको. आई डोंट नोइंग व्हाट वी कॉल्ड इन इंग्लिश. चीड़ का पेड़ कहते हैं जो पानी सोखता है ना. एंड in the between of बीज, मटर के बीच में, द बिटवीन ऑफ बीज द कल्टिवेशन ऑफ मूली. ओके, मूली,
ये है मूली, और मूली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार? यार you know, the big thing is that कि those I will learn in my childhood, like fruits name, vegetable name. I forget all the fruit and vegetable name. I will know also those names. Those are used in my daily life. Okay. What I am say now? Now this is the tree of kafal. पहाड़ी fruit है. Is a pahadi fruit. Okay. Is a fruit of kafal. Okay. You know, they are the fruits come in the summer season. Okay. Now I will show you another big tank of water in which we store up more of waters, because as you see that the all farms will be ready for cultivation of potato, and after the cultivate the potato after they cultivate the potatoes, वाटर पानी यहाँ से डलेगा इसमें, तो इतना भी नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, पानी यहाँ से डलेगा इसमें। ये सब आलू के मतलब खेत अभी तैयार हो रहे हैं हमारे वहाँ पे, ठीक है। एंड एज यू सी दैट द स्मॉल हाउसेस इन विच वी स्टोर पोटैटोज, दोज आर ग्रोन फ्रॉम दी फार्म्स, वी स्टोर इन दिस स्मॉल हाउसेस। ओके, एंड नाउ आई विल शो यू the big bagichas of peach and plums and other fruits. Okay, those in our garden. First of all, I will show you the garden of peach. Okay, the big gardens of peach in which my chachas sell almost 2.5 lakhs peach every year. Okay, now I will show you. Now this is a big garden of peach. I will show you deeply. Okay, in which garden there have almost 50 trees of peach, and also the new baby tree of peach also grown in another farm. Now this is a garden of oranges called Malta, पहाड़ी माल्टा बोलते हैं, and also cultivate. I am also farming of kiwi in the another farm. Okay. Now I will go back to home and introduce our village members, our family members. All village members are our family members. You know, we are all live together. So let's meet. Let's see the weather of our village of Uttarakhand, in which you show you a blue sky. Okay, and if you see in Delhi, Kolkata and other states, Haldwani, you can't see a blue sky because of pollution. Now I will introduce my Bubu. Bubu, कैसा लगना है यहाँ? बता तू जान। घाम सेक रहा है, बढ़िया धूप सेक रहे हो है? हमको तो अच्छा ही लगता है। अच्छा, अकेला से नहीं लग रहा है? जब हम चले जाएंगे फिर अकेला से नहीं लगेगा? फिर तो क्या लगेगा, फिर तो ऐसा कर लूंगा। अभी धूप सेक रहे हो, अभी हल्द्वानी में धूप सेकते ऐसे? हल्द्वानी में तो धूप ही नहीं आ रही, कहाँ से सेकते हैं? ये हमारी अम्मा है। कोहरा पड़ा है वो हल्द्वानी में। हल्द्वानी में तो बेकार हो गई हल्द्वानी। अच्छा, यहाँ नीला आसमान देखने को मिल रहा है। लियो का पड़ा लियो। यो पड़ोला वो यो उमे जनवरी में। मैं जाना पहले पड़ जालो। कहाँ पड़ा? यहाँ बैसा का फैन पड़ो। अब तो उल्टा जमाना है। अच्छा। Let's see Deepu. He is doing hard working, also talking with her girlfriend. हैं? अब इसको कोई आइडिया नहीं है कि मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, और इतना देखो कोई मतलब ही नहीं है। अभी इन आशिकों से जितना काम करा दो उतना कम है। देखिए। Now guys, I will show you everything in my village. Okay, my farms,
my family members and my brother. Now is take time to say bye and अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट में लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी इंग्लिश में ब्लॉग बनाऊं तो कमेंट करना। थैंक यू।